and exothermic reaction. Very interesting and amazing. Okay, endothermic, and here we come to endothermic and exothermic reaction. Okay, guys, perfect. So let's start quickly. Let me know if you are clear, so we can go ahead and start this now. Okay, let me know if you are ready and we can start this quickly in the chat box. Okay, perfect. So इन एंडो एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन बहुत इजीली तरीके से मैं ट्राई करूंगा एक्सप्लेन करने का. जस्ट बी विद मी हियर एंड बी अ कीन लर्नर हियर. ओके, सो वी कम टू द एंडो एंड. सो यहाँ पर क्या होता है समझो कि सपोज आई एम फीलिंग वेरी वार्म, सॉरी आई एम फीलिंग वेरी कोल्ड इन द विंटर सीजन. Okay, I'm feeling very cold in the winter season. So what do I do? I put a heater on. Okay, I put heater on. Heater हम चालू कर देते हैं and we feel very warm then. Similarly, तो यहाँ पर because heater में क्या हो रहा है कि heater it is giving us energy. Okay, similarly, in summer when I feel very warm, or humid, I put AC on. Okay, हम AC को ऑन कर देते हैं. So AC से क्या होता है, cool air आती है and it absorbs the heat in the surrounding. Okay, absorb करके cool air आती है. So we feel very cool. Okay, cold थोड़ा अच्छा लगता है and we feel good. Okay, that's what it happens. So one device is giving energy and one device is taking energy, right? One device is giving energy and one device is taking energy. So this is what happens in endothermic and exothermic reaction. Okay, process and reaction, I would say. So let's see what more on this, rather me telling you the definition first. Let's understand more. So for example, let's take an example of coal. What happens here is when we take coal and we burn it, so what happens? It releases heat. It releases the energy in form of heat. Heat को release करता है, right? Everyone knows coal gives the energy because इसके अंदर के जो chemical combination है, इसका जो chemicals है, right? जो इसके अंदर chemical energy है, वो convert होती है किस form में? Heat energy में. Its chemical energy gets converted into heat energy. So coal gives out the energy. Another example, when you burn the magnesium ribbon, आप सभी ने वीडियो देखा है मैग्नीशियम रिबन का. आई एम गोइंग टू प्ले इट अगेन एज वेल. तो मैग्नीशियम रिबन में क्या होता है? इट गिव्स आउट द एनर्जी. देखा है डैजलिंग फ्लेम, जितना हमने एनर्जी दिया, ऐसे समझो कि जैसे कोल में हमने थोड़ी सी एनर्जी दी, थोड़ा सा इसको बर्न किया, तो ये बहुत सारी एनर्जी के साथ एनर्जी बाहर लाता है, राइट? It releases a large amount of energy, right? It releases large amount of energy. Similarly, when we burn the magnesium ribbon, so we see the white dazzling flame here. तो थोड़ा सा मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से we get large amount of energy, थोड़ा सा ज्यादा एनर्जी मिलता है. So what happens here, when heat is given away by any reaction, when heat is given away or heat is released in any chemical reaction, then that reaction is called nothing but the exothermic reaction. Sorry, then we call it exothermic reaction. Exothermic. What does it mean? What does mean by exothermic? With the name says, as the name says only, it is very clear. Thermic means heat. It is related to heat. And exo means external out. Okay, exo means external out. तो ऐसे समझो, exo means external out and thermic means heat. तो heat is given out, heat is released in exothermic reaction. तो क्या होता है, कोई भी केमिकल रिएक्शन जहां पर हीट बाहर आती है, ज्यादा बाहर आती है, जितना हमने दिया है उससे ज्यादा बाहर हीट आती है, then that chemical reaction is what? Exothermic reaction. For example, real life example, crackers, burning of crackers. For real life example, burning of crackers.
आप सभी ने देखा बर्निंग ऑफ क्रैकर, आप थोड़ी सी उसको एनर्जी देते हैं, आप थोड़ा सा एनर्जी देते हैं, उसको फायर देते हैं, एंड व्हाट हैपेंस इन क्रैकर्स, a lot of sound energy, a lot of heat energy, temperature is rise, right? The heat comes out, lot of heat comes out, and that is what exothermic reaction, because heat is coming out, because heat is coming out, some energy is coming out, and that is in form of heat. So it is called exothermic reaction. Is that clear, guys? Yes, quickly let me know. I will write here burning of crackers so you can have the clarity. Yes, guys, quickly let me know in the chat box if you have understood this. I will take more examples and, you know, a lot of things to make you understand this. Yes, I'm waiting for your responses. Burning of crackers. Burning of crackers. लाइक आपकी कैंडल होती है, कैंडल में क्या होता है, यू गिव सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, थोड़ा सा हीट दे तो आप उसको जलाने के लिए, जलने के लिए, एंड देन इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ एनर्जी। वो जो वहां पर केमिकल रिएक्शन हो रही होती है, राइट, वो बहुत सारी एनर्जी बाहर आती है। दैट इज ऑल्सो अनदर एग्जांपल ऑफ exothermic reaction. That is also another example of exothermic reaction. Guys, I was waiting for your responses. If you have understood this, so you can let me know quickly in the chat box. Okay, great. Ajit is saying, Lakshmi is saying, Pradum is saying, Ashraf is saying, clear, perfectly clear. Thank you so much, guys. Okay, let's understand more endothermic reaction now. So I'm going to show you this here. Okay, we have one response that I'm. Ajit is saying, the water is boiling on the burner, the heat is going out in the form of vapor. Yes, Ajit, that is a chemical reaction, I would say. And वहां पर but वो physical reaction ज्यादा होती है because उसमें सिर्फ state change हो रहा था। और अजीत, in water, boiling of water, बहुत सारी heat देनी पड़ती है water को boil करने में, right? बहुत सारी हीट देनी पड़ती है वाटर को बॉयल करने में, थोड़ा सा हीट में काम नहीं होता, बिकॉज वी हैव टू गिव 100 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर द वाटर टू बॉयल। ओके, एंड दैट इज अ फिजिकल चेंज रिएक्शन। ओके, तो यहां पर हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि जब फेरस सल्फेट को हम बर्न करते हैं, when we burn the ferrous sulfate FeSO4, ओके, दिस इज FeSO4 का सॉल्यूशन है, सॉलिड है FeSO4, समझिएगा। इसको बर्न करने से क्या होता है, इसको जब हमने बर्न किया तो इसको हम हीट दे रहे होते हैं, हम इसको बर्नर में हीट दे रहे होते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस आते हैं, इसके में थोड़ा सा चेंजेस आते हैं, बट बहुत ज्यादा केमिकल रिएक्शन देखने को नहीं मिलता है। इन FeSO4 बहुत ज्यादा केमिकल रिएक्शन देखने को नहीं मिलता है। सो ऐसा क्या होता है कि जब हीट हम ज्यादा दे रहे होते हैं, इनटेक ज्यादा है हीट का, और जो आउट है, ओके, जो हीट का रिलीजिंग है वो बहुत कम है, देन इट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। We call it endothermic reaction because यहाँ पर क्या होता है, heat is taken in, heat is taken in, endo मतलब internal in, internal in, and thermic मतलब heat, तो heat is taken in, so it is called endothermic reaction. Don't worry, we will understand more on endothermic reaction. If you get any doubt, so don't worry, we are going to understand it a lot. Okay, अच्छे से पढ़ेंगे इसको अभी थोड़ा, ठीक है। वी विल टेक मोर एग्जांपल्स। सो FeSO4 में क्या हुआ है, हीट को दिया हमने तो फेरस ऑक्साइड बनता है, सल्फेट अलग हो जाता है, ठीक है। तो बट यहाँ पर क्या हो जाता है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, बिकॉज हीट यहाँ पर हम ज्यादा दे रहे होते हैं और हमें हीट जो रिलीज होती है वो बहुत कम रिलीज होती है, थोड़ा बहुत चेंजेस आते हैं, कलर चेंज आता है, बट हीट बहुत कम रिलीज हो रही होती है, हीट बिल्कुल ना के बराबर रिलीज हो, दैट्स व्हाई। तो हीट यहाँ पर ज्यादा दे दी गई है और रिलीज हीट कम हुई है, that's why it is called endothermic reaction, because heat is taken in, heat has been taken in. Okay, so let's understand why does this happen, my molecular way पे ऐसा क्यों होता है और कैसे होता है, ठीक है। Okay, so now we will understand कि how does that happen, होता कैसे है। So here is the example for that. So क्या होता है, जब भी कोई भी दो एटम्स है, मॉलिक्यूल के दो एटम्स है, ओके, when atoms of two molecules and we have to separate them, तो सेपरेट करने के लिए हमें क्या करना होता है, एनर्जी लगानी पड़ती है, एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट
सेपरेट देम, उनको सेपरेट करने के लिए क्या होता है, एनर्जी का रिक्वायरमेंट। कोई भी दो एटम्स को अगर हमें सेपरेट करना, कोई भी दो चीजों को हमें खींचना है, अलग करना है, सेपरेट करना है, तो एनर्जी हमें देनी पड़ रही है। क्या करना पड़ रहा है, एनर्जी, वी हैव टू गिव एनर्जी। ओके, वी हैव टू गिव एनर्जी। सो दिस इज अ फॉर्म ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऐसा होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन में। क्या होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन में, कि मॉलिक्यूल्स को हम ज्यादा एनर्जी दे रहे हैं जिससे वो थोड़ा सा कुछ उसमें सेपरेशन आ जाए, तो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट बहुत कम होता है, इसलिए एनर्जी बहुत कम रिलीज होती है, तो वी कॉल इट एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक। बट जबकि हीट रिलीज में क्या होता है, सॉरी एक्सोथर्मिक में क्या होता है, कि टू एटम्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर, two atoms are attracted towards each other, we don't have to give energy, even if you have to give, we have to give minimal amount of energy, थोड़ा सा एनर्जी देने में they get attracted towards each other, and जैसे वो अट्रैक्ट होते हैं तो वहां पर क्या होता है, कुछ एनर्जी फॉर्म होती है, उसको कुछ एनर्जी रिलीज होती है, तो उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। they get, that gives the exothermic reaction, that gives exothermic reaction। Let's understand this in a magnetic way। okay, magnetic way पे हम समझते हैं, थोड़ा सा मैग्नेट के एग्जांपल समझते हैं, ठीक है, समझिए। just one second। so what happens in magnet, suppose यहाँ पर दो मैग्नेट अट्रैक्टेड रखे हुए, पास पास में रखे हुए हैं, अपोजिट यहाँ पर साइन सिंबल से, मतलब नॉर्थ एंड साउथ आर लाइक दे नो stick with each other, they are stuck with each other, तो इनको सेपरेट करने के लिए we have to give energy, right? to separate them we have to give energy, to separate them we have to give energy। so what are we doing, we are giving energy, we are giving energy। so this is endothermic, जहां पर हम एनर्जी दे रहे हैं, जहां पर एनर्जी हम दे रहे हैं, मतलब एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड, energy is taken, energy is absorbed during the change energy is absorbed, so this is called endothermic reaction। यहां पर क्या होता है, अगर ये यहाँ पर अपोजिट है, ये दोनों पहले से ही दूर रखे हुए हैं, ये दोनों पहले से ही दूर के, तो थोड़ा सा हमने इनको फोर्स दे दिया, थोड़ा सा हमने पुल कर दिया, इनको पुश कर दिया, तो अभी क्या होगी, जब ये पास में आएंगे दे विल कोलाइड विद ईच अदर, और आवाज आएगी, टड़ाक से आवाज आएगी, टक से आवाज आएगी, राइट, आवाज आएगी, देयर विल बी साउंड, सो सम काइंड ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, so that's why it is called exothermic reaction, that's why it is called exothermic reaction, because यहाँ पर क्या हुआ है, एनर्जी रिलीज हुई है। so quickly let me know in the chat box if you have understood this। yes guys, quickly let me know if you have understood this quickly। Amit has understood, Nidhi has understood, let's wait for more responses। okay, let's take more examples and get this clear। before we go ahead, Divya has a doubt, is formation of precipitate a characteristics of double displacement reaction? yes Divya, that is completely true। yes, precipitate में double displacement reaction होता है, because वहां पर क्या होता है, precipitate मतलब कि जो one कंपाउंड या फिर जो वो क्या है, इनसॉल्युबल है, वो सॉल्युबल नहीं है, तो क्या हो जाता है, वहां पर रुक जाता है, तो वहां पर जाकर जम जाता है, प्रेसिपिटेट है, जम गया, नीचे आकर बॉटम में रख गया, तो दैट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का फॉर्मेशन है। डबल डिस्प्लेसमेंट में एक और होता है, न्यूट्रलाइजेशन होता है। न्यूट्रलाइजेशन का भी होता है जहां पर एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं और वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, बिकॉज वो क्या बनाते हैं, वाटर बना देते हैं और कुछ और बना देते हैं, तो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। ओके, सो द प्रेसिपिटेशन एंड न्यूट्रलाइजेशन इज अ टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, अभी मैं आगे और समझाऊंगा, ठीक है, डोंट वरी। तो अगर डाउट है तो प्लीज आस्क मी, इफ यू रीड एंड इफ यू हैव डाउट प्लीज आस्क। Akash is saying to release energy, does it need energy externally? No, Akash. Yes, you can say externally, because we have to give some amount of energy. Okay, we have to give some amount of energy जिससे वो ज्यादा एनर्जी रिलीज करे, then we call it exothermic reaction. ठीक है? Now let's take an example. Tell me melting of, okay, now tell me this. Okay, boiling of water is an endothermic or exothermic? चलिए बताइए मुझे, boiling of water is an endothermic or exothermic reaction?
Yes, tell me. अमित सिंह एंडोथर्मिक, लक्ष्मी सिंह एंडोथर्मिक। देखो, बॉइलिंग ऑफ वाटर इज अ फिजिकल चेंज। तो कुछ फिजिकल चेंज में एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है, कुछ फिजिकल चेंज में एनर्जी रिलीज की जाती है। बॉइलिंग ऑफ वाटर में वी हैव टू गिव अ लॉट ऑफ एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारा टेम्परेचर देने के बाद थोड़ा सा बॉइलिंग और उसमें एनर्जी रिलीज होती है। दैट्स व्हाई दिस दैट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, नॉट एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बिकॉज उसमें बहुत ज्यादा हीट हमें देनी पड़ती है। ओके, अनदर एग्जांपल है, चलिए आपने वो देखा था पिछला वीडियो आपको याद है जहां पर आपने कैल्शियम ऑक्साइड में, ओके, कैल्शियम ऑक्साइड में आप वाटर में कैल्शियम ऑक्साइड चूने को डाला था, तो वहां पर क्या हुआ था? चलिए बताइए, व्हाट हैपेंड देयर, व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन टुक प्लेस देयर व्हेन यू ड्रॉप्ड कैल्शियम ऑक्साइड चूना, ओके, उसको लाइम को, क्विक लाइम को आपने वाटर में डाला, तो क्या हुआ था? ओके, लक्ष्मी, दिव्या, आकाश, एवरीवन इज सीइंग एक्सोथर्मिक। वेरी गुड गाइस। आपने क्या कोई हीट देनी पड़ी आपको? ज्यादा नहीं देना पड़ा। वाटर में जैसे ही आपने बबल्स बने, वेरी गुड अजीत, बबल्स बनने लगे, तो जैसे ही आपने वाटर में कैल्शियम ऑक्साइड को डाला तो वहां पर क्या हुआ? बबल स्टार्टेड फॉर्मिंग, द बकेट गॉट वार्म, थोड़ा सा हीट बाहर आया। दैट इज एन रिएक्शन ऑफ exothermic, that is a reaction of exothermic, because their heat is coming out, that is why bubbles were forming, that is why the vapors were coming out, because वहां पर क्या हुआ? exothermic reaction हो, because heat came out. Okay, so I hope you have understood क्यों होता है। आई होप समझा कि एंडोथर्मिक में क्या होता है कि यहाँ पर सेपरेशन ज्यादा होता है, एक्सोथर्मिक में क्या होता है? अट्रैक्शन ज्यादा है मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो खुद ही रिलीज करते हैं एनर्जी को ज्यादा। ठीक है, सो लेट्स टेक मोर एग्जांपल्स एंड अंडरस्टैंड इट बेटर। Okay, so we are going to watch a video here. Okay, now we are going to watch a video here. Give me a second. I'll stop sharing the screen. We're going to watch a video here and we're going to understand more on this. Okay, so पहला हम देखते हैं, पहला वीडियो हमारा ये रहा। Just give me a second. So I hope you can see this. Right, so magnesium ribbon is going to be burnt in presence of oxygen. Okay, magnesium ribbon को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करना है, and we'll see whether it is endothermic reaction or exothermic reaction. तो थोड़ा सा देख रहे हो क्या हीट दे रहे हो, क्या होता है? As you can see that magnesium burns with a dazzling white. Can you see the amount of heat is given? उससे ज्यादा हीट यहाँ पर बाहर आ रहा है, उससे ज्यादा ही हीट बाहर आ रहा है यहाँ पर, राइट? तो दैट्स व्हाई इट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड है, दैट इज व्हाट? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कैन यू सी इट हियर? कैन वी से नाउ that magnesium oxide is nothing but the exothermic reaction, because we see more heat coming out than the given one, right? Is that right? यहां पर क्या हो रहा है? जितना हीट हमने दिया उससे ज्यादा हीट बाहर आया, so that's why burning of magnesium ribbon is what? Exothermic reaction. That is the reason it is an exothermic reaction, right? We're going to watch one more video. Okay, give me a second. We are going to watch one more video here and we will see the ferrous sulfate wala video. I said the ferrous sulfate video we will see. Give me a second. Okay, give me a second. I'm sharing the screen now. Watch this very carefully. Okay, and if you have any doubt, let me know. I'll play this now. So here I have light green crystals of iron sulfate and I'm going to heat them. Now when I do that, I notice a color change happening. In fact, there is also some smelly gas that is evolving.
So definitely there is some chemical reaction that is going on. But see, in this process, I'm not getting any light or heat energy. In fact, I had to provide a lot of heat energy for this reaction to start. That means this reaction is an endothermic reaction. It requires a lot of heat energy. It takes in a lot of heat energy. Hi guys, I think you would. So guys, did you understand? Did you get that? The ferrous sulfate वाला एग्जांपल जो मैंने पहले सबसे पहले लिया था, did you get that? जो एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिया था सबसे पहले, ये फेरस सल्फेट वाला एग्जांपल FeSO4, the one I said, here I have taken the example of FeSO4, राइट? यहाँ पर क्या हो रहा था, अभी आपने वीडियो में क्या देखा कि दैट कि यहाँ पर जो कलर चेंज हो रहा है, थोड़ा सा साउंड भी आएगा, थोड़ा सा एनर्जी भी बाहर आएगी, बट इतना ज्यादा एनर्जी नहीं बाहर आ रहा जितना हमें उसे देना पड़ रहा है. वी हैव टू प्रोवाइड इट अ लॉट ऑफ एनर्जी. ओके, वी हैव टू प्रोवाइड इट लॉट ऑफ हीट इन फॉर्म ऑफ एनर्जी. तो उसकी वजह से क्या हुआ, दिस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, नॉट एक्सोथर्मिक रिएक्शन. दैट इज व्हाई इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, नॉट एक्सोथर्मिक रिएक्शन. Okay, I hope you get that. So if I write it, how would I write it in form of reaction, chemical reaction के कैसे फॉर्म में लिखेंगे? कोई बता सकता है मुझे इसका केमिकल रिएक्शन कैसा दिखेगा? Yes, quickly let me know. Anyone in the chat box? How would it seem? Can you make the chemical reaction? This ferrous sulfate heat in presence of oxygen. Okay, okay, I think, do I have to write Fe? कैसा दिखेगा? 1 second. I will write it in different way. Okay, let me write. So here you can write 2. मैं बैलेंस करके लिख रहा हूँ रिएक्शन को. FeSO4 2FeSO4 इज क्या हुआ, यहाँ पर हीट दिया जा रहा है. क्या हो रहा है? वी आर गिविंग इट हीट. ओके, वी आर गिविंग इट हीट. जस्ट अ सेकेंड. वी आर गिविंग इट हीट. ओके, just a second. अजीत इज आस्किंग व्हाई 2. अजीत, बैलेंस बच्चा, बैलेंसिंग कितनी बार मुझे सिखाना है? बैलेंसिंग कितनी बार सिखाऊं बच्चा, बताओ. बैलेंसिंग द इक्वेशन, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट. आई बिलीव यू कैन. अभी तक समझ में आ जाना चाहिए कि बैलेंसिंग क्या करना है हमें. ठीक है, मैं Fe बस लिख देता हूं. FeSO4, ठीक है. इट इज क्या हुआ, इसको हम क्या दे रहे हैं? हीट दे रहे हैं. वी आर गिविंग इट हीट. व्हाट आर वी गिविंग? वी गिविंग इट हीट. हम इसे हीट दे रहे हैं. हीट. वी ऑल्सो लर्न द सिंबल ऑफ फॉर द हीट इज डेल्टा. द सिंबल फॉर हीट इज डेल्टा. ओके, सो यहां पर क्या मिलेगा हमें? हीट दिया हमने तो. ओके, just a second. Okay, so we have given it heat here. Okay, so we get, what do we get? Fe. You can balance it later also. Okay,
वी गेट Fe2O3 और प्लस हमें क्या मिलता है यहाँ पर, और क्या मिलता है, सल्फाइड यहाँ पर मिलेगा, सल्फर ऑक्साइड मिलता है हमें, वी गेट द सल्फर ऑक्साइड, और हमें यहाँ पर एक और क्या मिलता है, सल्फाइड भी मिलता है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी गेट। अनदर, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल हियर, if I write it and I want you to do this on your own, okay, चलिए करते हैं। मैंने बताया फॉर एग्जाम्पल वी हैव टेकन AgCl, जो हमने एग्जाम्पल लिया था, सिल्वर क्लोराइड को एग्जाम्पल लिया, और इसको सनलाइट के प्रेजेंस में हमने हीट किया, इसको सनलाइट में रख दिया, ओपनली सनलाइट में रख दिया। तो सनलाइट में क्या होता है यहाँ पर, Ag सिल्वर अलग हो जाता है, और यहाँ पर क्या होता है, क्लोरीन अलग हो जाता है। दिस इज ऑल्सो अनदर एग्जाम्पल ऑफ endothermic reaction because the energy is given here. Another example, H2O, water को electrolysis, आपने सुना होगा electrolysis process, okay, the electrolysis process, I will write it here, electrical energy देते हैं, electrolysis process, electrical energy, okay, electrical energy दे रहे हैं, electrolysis बोलते हैं, this process is known as इलेक्ट्रोलिसिस। यहां पर सनलाइट दिया हमने, सनलाइट के प्रेजेंस में इसको रख दिया, तो ये क्या हो गया, एनर्जी पाकर ये सेपरेट हो गए, अलग अलग हो जाता है सनलाइट, ठीक है। नाउ सो यहां पर क्या होगा, एक सेकेंड, जस्ट 1 सेकेंड। So what happens here is, तो यहां पर जैसे ही हमने इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया, तो आपको पता है इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में क्या होता है, H2 gets separated with the ऑक्सीजन और हाइड्रोजन सेपरेट हो जाते हैं। So this is called electrolysis process. This process is called nothing but the electrolysis process. This process is called electrolysis. You can Google it, you can check it, you can understand it that way. So these are also the form of endothermic reactions. These are also the form of endothermic reactions. Okay. So if that is clear, are we clear with that? Guys, are we clear with that? And Ajit, please get your clarity on balancing the equation. If you are still asking me 2 क्यों आता है, why, so I would be more than happy to tell you why 2 क्यों आता है, but अगर आप, मुझे थोड़ा और ज्यादा अच्छा लगेगा, but if you, because you try on your own, why 2 is there, okay, why 2 is there. Just do one thing, यहां पर पता है आपको, ऑक्सीजन, देखो यहां पर ऐसे समझो, सिंगल, यहां पर ऐसे समझो, ऑक्सीजन इज व्हाट, ऑक्सीजन निगेटिव आयन वाला है, सल्फर भी निगेटिव आयन वाला है, इनको हीट मिला है, तो सेपरेशन होगा ऑक्सीजन और सल्फर में। तो सल्फर जब Fe को, इसका रिएक्शन बनाओ, Fe की कितनी वैलेंसी है, तो कितने ऑक्सीजन लगेंगे उसको रिएक्ट करने के लिए, और जो बाकी ऑक्सीजन बचेंगे वो किसके साथ चले आएंगे, सल्फर के साथ चले आएंगे। तो कितना बनेगा, जस्ट डू दैट, ओके, ट्राई डूइंग दैट एटलीस्ट वंस ऑन योर ओन। बच्चा एक बार खुद से ट्राई करो, नहीं होता है तो डेफिनेटली आई विल टेल यू, दैट्स व्हाट आई हैव बीन डूइंग। इफ यू स्टिल डोंट गेट इट, आई विल टेल यू, बट एक बार खुद से ट्राई करके देखो, व्हाई, ओके, how the reaction takes place. I have been saying this for, you know, days now, that if you don't try the reaction on your own, नहीं करेंगे तो how will we understand this clearly? Okay, so here we complete the endothermic and exothermic reaction.